ABSL AMC के मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम अब जुड़ गए हैं। मिस्टर बालासुब्रमण्यम, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ETNow स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आज शुरुआत आपसे बाजार पर ही आपका नजरिया जानकर करना चाहेंगे, क्योंकि बाजार में जिस तरह से हमने पिछला पूरा हफ्ता कमजोरी देखी, इस हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी होती हुई दिखी है। ये हफ्ता ट्रिगर्स के लिए लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी लिस्टिंग भी होने जा रही है। कैसा लग रहा है मार्केट का आउटलुक आपको? Good morning. Thanks for having me on the show. जो हिसाब से मार्केट का जो ग्लोबल आउटलुक जो चेंज होते जा रहे हैं, क्लियरली द लास्ट few months driven by high inflation, high commodity prices, uncertainty of growth, debate and discussion about stagflation or recession. ये बेसिस में मार्केट का आज के दिन में जो मूव चल रहा है, क्लियरली आई थिंक इज नॉट गोइंग टू गो अवे इमीडिएटली, क्योंकि मार्केट का थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, फिर भी मार्केट मेरे हिसाब से will move in a narrow range given the fact आप कोई भी चीज इन्फ्लेशन लेके इंटरेस्ट रेट्स लेके हर चीज आज के दिन पे is more on the uncertain period. So therefore I think the flows will generally remain muted and overall market momentum also will remain more in narrow range. दूसरा एक ही अच्छा है, एक्चुअली क्वार्टर का रिजल्ट जो आया एक्चुअली इज बीन कमिंग, इज बीन मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग विद रिजनेबली गुड रिजल्ट, एंड उसका बेसिस पे मार्केट का जो इंडिविजुअल स्टॉक्स के हिसाब से momentum chal raha hai, that something is, I think is a trend that we can see. And second is RBI already they started hiking the rates, means market का हमेशा actually जो interest rate के हिसाब से जो हमेशा चलते रहते हैं, that something is also reflected in the market. So therefore to some extent while we can say it's already discounted, clearly we'll have to just give more time for some more clarity to emerge. Therefore मेरे हिसाब से market का range में move होना चाहिए। बाला, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप ETNow स्वदेश को समय दे रहे हैं। इस बार जब साल के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई थी तब ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद इन्फ्लेशन इतना बड़ा प्रेशर भी हो सकता है, बट हाँ धीरे धीरे उसका फील, उसकी हीट अब हमको देखने को मिल रही है। चाहे मार्जिन्स को लेकर सर्वाइवल को फाइट हो रही हो या फिर अब ग्राउंड चेक भी है, गवर्नमेंट भी थोड़ा एग्रेसिव है इसको लेकर। देखिए उन्होंने फटाक से 40 BPS बिना मीटिंग किए हुए शक्तिकांत दास ने बढ़ा दिए। ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर कितने क्वार्टर्स तक अभी और परेशान कर सकता है अर्निंग्स को? आपका असेसमेंट क्या है इस पे? सी इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से जो आरबीआई गवर्नर पहले द फर्स्ट पॉलिसी में did not agree that, rather did not foresee that something they need to do. Within 15 days जो आके उसका रेट बढ़ाया, means there is a higher recognition for the inflation to become a threat for the global economy. जिस हिसाब से जो प्राइस जो बढ़ा है, actually especially the energy prices which are shot up globally, आज के दिन पे भी energy prices is something, it remains high, and we have to still see how, to what extent oil price is going to actually move, and that's something will remain uncertain given the fact अगर चाइना पेंडेमिक अभी जो ओपनिंग इकोनॉमिक नाउ स्टार्ट हैपनिंग इन चाइना, अगर चाइना का एक बार ग्रोथ आना, उम्मीद आना शुरू हो गया, then there is a high probability oil will remain in a range. At the same time, the agri commodity prices, which also have been gradually inching up, which what impact in the US economy. So therefore, इसका मेरे हिसाब से और 2-3 महीना देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट अभी जो बढ़ा है उसके बाद पीछे पीछे इन्फ्लेशन कम होने के चांसेस बहुत कम है। So one of the bigger factors which I think my way will come for India is the monsoon predictions are really good. And India production has been pretty good in terms of agriculture output. So मेरे हिसाब से फूड इन्फ्लेशन इंडिया में ज्यादा होने की उम्मीद है नहीं है, that biggest comfort will come. थोड़े से I think यूक्रेन और रशिया का some semblance comes in terms of settlement of any manner. I think commodity prices will come crashing, therefore leading to a positive impact on inflation. Therefore the high probably maybe in another 1.5 months we could probably see it hitting. That I think उसके बाद I think मेरे हिसाब से adjust होना शुरू हो जाना चाहिए on the downside. All right, morning Bala, pleasure to have you. Priyanka here. Would you be comfortable talking about AMC space? क्योंकि आज जिस तरह की एक बड़ा हिस्टोरिक डे भी है जब आप हमसे जुड़ रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं। LIC के IPO के बाद किस तरह की आप री रेटिंग, किस तरह की पॉसिबिलिटीज आप इंश्योरेंस AMC स्पेस में देखते हैं? जाहिर तौर पर DI का तो खैर बड़ा कंट्रीब्यूशन, DI म्यूचुअल फंड्स का तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है एज एन इन सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, तो फॉर श्योर यहाँ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स तो हैं, पर लॉन्ग टर्म में किस तरह की पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं इंश्योरेंस स्पेस के लिए?
See, financial space will remain one of the key part. I think it's a proxy to the economy. I think savers have to actually look at alternate way of investing. एक तो mutual funds AMC space will remain a large space for channelizing financial savings to the capital market. आज के दिन पे जो DIA का जो buying जो दिख रहा है is mix of insurance and mix of AMCs and alternate space. I think this will remain one of the big element. Question doesn't arise. I think insurance companies definitely, I think the deep penetration that they exist in the country, the more and more people have to get insured, especially post pandemic. The insurance ka awareness jo badh gaya actually, that every individuals want to have an insurance policy in order to ensure his own wealth and other means of savings get protected. Therefore, the protection will remain one of the key element for the financial saving market. Therefore, totally look at financial business in general will remain the proxy of the economy, a large component of the market. I think savers' point of view, financial market savings will become increasingly the larger given the fact interest is remaining low. So therefore, individuals will start looking at alternate way of investing. Isme insurance or AMC space will remain a large space. For market point of view, will all depend upon the moving situation like valuations and then growth, momentum, margins, all those things will drive the stock prices. Therefore, I don't want to comment on the stock price, but this space will remain as a large space from the industry point of view. Mr. Balasubramanian, ऐसे में फिर इंडस्ट्री फेवरेट्स आपके कौन से हैं, सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पर आप ना फोकस कर रहे हैं और कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जिनसे दूर रहने की राय आपकी तरफ से आती हुई दिखेगी? I think clearly the way we approach is the entire portfolio construction. That's the way money managers build the portfolio. Clearly, there are two things for the economic point. Like those structurally sound companies that we invest in for long term, basically technology, capital goods sectors, or the banking and financial sectors, even the sectors like FMCGs and pharma sectors, all will become a core part of the any portfolios. I call it as a core portfolio. And then the satellite portfolio, which basically you take exposure on the basis of the cyclical nature of these companies, and then how the companies benefit out of certain situational changes like commodity companies, which I think I've seen already a rise. Therefore, one probably we did but lower weight in terms of exposure. Otherwise, जो हिसाब से portfolio construct करते हैं is more of the structural basis. The third actually is the domestic cyclicals like autos. They're all domestic cyclical companies. Domestic cyclical companies we normally remain bullish, but at the same time, one has to see the trend change that's coming in. Given the fact that industry also going through disruptions, therefore how companies are adapting, how consumer behaviors are changing, I think that all will change on a time-to-time basis. Therefore, we can't hold a negative view permanently. At the same time, we need to be conscious of the fact that these sectors will remain integral part of the systems. बाला, क्या आप फिर से वो फेस देख सकते हैं जो फेस आज हमने 2-2.5 महीने पहले देखा था जब कमोडिटी के प्राइस एकदम से सडन राइज हो गए थे, यूएस मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी? एक्चुअली मेरा ना एक क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि एलन मस्क ने बोला है कि वो उनको ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट में ना रिसेशन रहेगा अगले 12 महीने के लिए, यानी कम से कम 1 साल के लिए. इसलिए मेरे मन में थोड़ा डाउट आ रहा है, इसलिए मैं आपसे पता करना चाहता हूँ. See, I think clearly there are 2-3 moving factors. एक तो the current moving factor is actually the uncertainty still continuing with respect to the Ukraine Russia war. So how long it will go on, one doesn't know. Second is China's slowdown is also one doesn't know how things will pick up. But one thing remains, which I think US economically is something which is there, is about employment rates today in US is far better. Unemployment rates are coming down. The number of people are actually getting jobs have been rising. The wage growth has been rising. That also an indication of economy, मेरे हिसाब से, is a stable and steady. So therefore, it's something stagflation or inflation. The recession has been a big point of discussion and globally, and at this point of time, we can say probably we're in a stagflation kind of scenario which will emerge. I think recession doesn't seem to be there. One single factor is wage inflation is rising, employment rates are good. Therefore, उसके हिसाब से देखेंगे तो clearly नहीं है. But at the same time, the commodity price is rising is not because of anything else, it's because of the
सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, आपको डिमांड थोड़ा सा डिमांड है, बट सप्लाई कंस्ट्रेंट आ चुका है फॉर लास्ट एक साल में. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है अभी भी, and the moment of goods, if it gets stopped, then actually it leads to a elevation of cost and prices, but also to some extent has happened in the global market. बाला, ये तो फॉर श्योर है, जिस तरह की बात लगातार एक्सपर्ट्स हम करते हैं और एक व्यू निकल कर आता है कि वी आर इन अ बुल रन, और ये बुल रन में शायद हर बुल रन में कुछ ना कुछ आपको मल्टीपल टाइम्स करेक्शंस दिखते हैं. मे बी इट कैन बी अ करेक्शन फेज, बट क्या वो करेक्शन फेज ओवर हो गया है? आप अगर ग्लोबल रिपोर्ट्स को देखें तो वहां पर एक व्यू ये बदलता दिख रहा है कि शायद अब इन्फ्लेशन पीक पर है, कोविड केसेस कम हो गए हैं, अब ओवरऑल आपको चाइना की इकोनॉमी भी खुलती हुई दिखाई दे रही है. सो कई सारे बड़े ट्रिगर्स, कमोडिटी प्राइसेस शायद थोड़े, क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस हालांकि उसमें एक वॉलेटिलिटी है, वो एक चाल जरूर देखनी होगी, लेकिन इन सब बेसिस पर अब शायद एक रिकवरी मोड भी शुरू हो जाएगा. और अब आप देखें भी, वॉरेन बफे ने भी पिछले 3 महीने में दूसरी बड़ी अपनी खरीदारी भी की है और बैंक्स और फाइनेंशियल्स में मेजरली किया है. तो आपको लगता है कि अब शायद एक रिकवरी का मोड, सिलेक्टिव रिकवरी का मोड शुरू हो गया है? I think clearly रिकवरी मोड आ जाएगा. I think मेरे हिसाब से इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू एक तो बढ़िया चीज हुआ एक्चुअली 1-2 साल में. कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो चुका है. कंपनी इज सिटिंग ऑन कैश, एज यू राइटली पुट, वॉरेन बफेट इज बाइंग बैक हिज ओन शेयर्स. मेरे हिसाब से दिस इज अनदर ट्रेंड व्हिच विल इमर्ज इन नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि मार्केट का अगर प्राइस सस्ता हो गया है, कंपनीज कैन एक्चुअली बाय बैक द शेयर. दैट्स समथिंग व्हिच आई थिंक विल हैपन. सेकंड, फ्रॉम ए रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हिसाब से इंडिया विल बी द biggest recovery will happen for 2 reasons. One, गवर्नमेंट को जो खर्चा जो आज के दिन में जो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस रिमेन, उसका वजह से डिमांड फॉर मेटल, सीमेंट एंड अदर कमोडिटीज कंटिन्यूस राइज. एंड सेकंड इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी will continue to do well given the good monsoon, and consumer spending in India is just beginning to pick up. I think if we go by that lead indications, definitely 1-2 महीने में I think India probably will start drawing some attention in terms of growth coming back. I think just a question of time. They're all passing phase. अगर वो moment जो confirmation अगर इंडिया के लिए आ गया with the high grade political reform that political stability that we have, big reforms that are being undertaken, मेरे हिसाब से foreign flows reverse होना उम्मीद बहुत ज्यादा है. आज के दिन में foreign outflows have been happening. The moment noise levels gets reduced globally, I think the foreign flows will come to India, which I think it's high probability in the coming few months. Mr. Balasubramanian, when you say stagflation, that's a great observation because काफ़ी कम लोग हैं जो फिलहाल इसे सेंस कर पा रहे हैं, एंड काफ़ी कम लोग हैं हु आर फीलिंग द नीड, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग द हीट, हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, काफ़ी कुछ है जो कि इन दिनों बाजार को, इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा है. ऐसे में इंटरेस्ट रेट्स भी हैं. हमने अभी एक सडन शॉक भी देखा था इंटरेस्ट रेट्स को लेकर. आने वाले दिनों में भी इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के अनुमान है. आपका क्या टेक है इस पर और इससे इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा? सर, इंटरेस्ट रेट में पहले बार सबका यूनिफॉर्म व्यू है that interest rate will go up by almost about 1%. आप कोई भी इकोनॉमिक्स बात सुनते हैं और मनी मैनेजर सुनते हैं, क्लियरली इज नाउ इज एस्टैब्लिश्ड 1% का रेट आएंगे, एंड लोग एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बिल्ड हो गया. क्योंकि आप बॉन्ड मार्केट में देखते हैं, क्लियरली 10-year बॉन्ड इज नाउ ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 7.6, 7.7. US 10-year bond is now trading about close to 3%. इसमें ऑलरेडी मार्केट इज डिस्काउंटिंग ये रेट हाइक. So दूसरा एक actually the bond market is actually true reflection of what is the mood of the market is. आज के दिन पे अगर 1 साल के बाद 1 साल का पेपर आज के दिन में खरीदना है, is already trading at about 6.5% yield as against 1 year yield about 5.5 or something. So therefore the market is already discounting. So our own belief is, our house view is actually interest rates will go up by at least, my own personal belief is 50 to 70 basis points hike का उम्मीद है. Bond market already reflects that. आज के दिन पे जो बॉन्ड डील्स इतना बड़ी है, also is something reflection of especially government bonds के लिए जो नहीं बढ़ी है. Maybe it will so happen, will become so attractive for investors' point of view, even from money managers' point of view, to go and park some money in the bond market as well. I think मेरे हिसाब से जो I have spent good number of years in the market. I think now first time ever after very very long time, after 3-4 years, we are seeing some opportunity coming in the bond market from an investor's point of view. ठीक है बाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके. आई होप आपसे वापस जल्दी मुलाकात होने वाली है. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच. आज आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच.